about some that is sum of product, sum of product and product of sum. बेसिकली कोई भी जो आपका एक्सप्रेशन है मैथ में, आपका जो सर्किट में जो बुलियन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, दैट फंक्शन इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स. Sum of products, you can write products because number of products are there. So sum of products and product of sums को डिस्कस करने से पहले we just discuss about the product term and sum term. ठीक है ना? तो basically we just say that the logical function, whatever logical functions, कोई भी लॉजिकल फंक्शन, बुलियन फंक्शन जो भी है, वो दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी और प्रोडक्ट ऑफ सम. तो लॉजिकल फंक्शंस आर जनरली expressed in terms of logical variables and values taken on values taken on by the logical functions and logical variables are in binary form. तो लॉजिकल फंक्शन जो है वो जनरली लॉजिकल वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेस होता है, और जो वैल्यूज है वो दो ही तरह से हो सकता है. तो कोई भी लॉजिकल फंक्शंस में जो लॉजिकल वेरिएबल्स का वैल्यू हम लेंगे वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में लेंगे. तो एन आर्बिट्रेरी लॉजिक फंक्शन can be expressed in the following form. That is, first one is the SOP and second one is the POS. That is sum of product and product of sum. तो कोई भी आपका जो बुलियन फंक्शन होगा, आप देखते होंगे या तो वो एसओपी फॉर्म में होगा या पीओएस फॉर्म में होगा. नाउ बिफोर डिस्कशन ऑफ एसओपी एंड पीओएस, there is two terminology, that is the products and sums. That means number of product term is there and number of sum term is there. So whenever we discuss SOP, so SOP consists number of product term, because in between various product term we are placing sum. So sum is representation for the logical OR and product is the representation for logical AND. So we have several product term, on in between that product term we are applying logical OR operation. So SOP is what? Sum of product. So we just discuss first product term and sum term. What is product term and sum term? First we discuss product term and then we discuss sum term, because this product term and sum term is used in these types of expression. यानी कि जो भी एक्सप्रेशन है वो एसओपी या पीओएस में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एसओपी में यू आर यूजिंग प्रोडक्ट टर्म. आर्बिट्रेरी लॉजिक फंक्शन क्या हुआ? हाँ, आर्बिट्रेरी लॉजिक फंक्शन का मतलब कि एनी टाइप्स ऑफ
सर्किटरी मतलब जो भी आप आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ पे हो गया जिसमें किसी भी तरह का लिटरल्स आप यूज करते हैं, दैट लिटरल्स आर यूज्ड आइदर इन द कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो जो भी लॉजिकल फंक्शंस होगा उस लॉजिकल फंक्शंस में हमारा जो वेरिएबल है वो दो ही तरह से रिप्रेजेंट होता है, आपका या तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा या नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। दूसरा कि जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वो आप आइदर 0 या 1 होल्ड करेंगे, यानी बाइनरी फॉर्म में आप लेंगे। अब प्रोडक्ट टर्म क्या है, जैसे अगर दो वेरिएबल ले रहे हैं, एटलीस्ट दो वेरिएबल तो जरूरत होगा, तो प्रोडक्ट टर्म ले रहे हैं लाइक ए बी, ए बार बी बार, ठीक है ना, ए बी सी, ए बार बी बार सी बार। तो ऑल आर व्हाट इन बिटवीन ए बी, in between ABC or whatever literals we have either in complemented and non-complemented form, we are placing AND operation, yani we just place AND in between various set of inputs. So product term is what, for two variable like AB, for three variable ABC or ABC bar, any types of combination you can take in the logical function. तो प्रोडक्ट टर्म दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, जितने वेरिएबल के लिए प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे उस प्रोडक्ट टर्म को अगर हम एसओपी में यूज करेंगे यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, तो वी जस्ट प्लेस लॉजिकल और इन बिटवीन सेवरल प्रोडक्ट टर्म, लाइक व्हेनेवर यू आर राइटिंग ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार, ठीक है ना, तो यू आर यूजिंग एसओपी फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। आप एसओपी फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका सम ऑफ प्रोडक्ट यूज हो रहा है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब यानी कि ए बी इज इन प्रोडक्ट टर्म, A bar B bar is also in product term, AB complement is also in product term, and in between this three expression you are placing logical OR operation. तो जो logical OR operation है, we just take the particular terminology first. Product term अगर हम discuss करते हैं तो product term is what? Product term को कैसे आप define करेंगे? Because product term में हम AND operation perform करेंगे, तो in product term we just mention the AND function, AND, that is the logical AND. The AND function is referred to as, ठीक है ना, as a product, यानी जो AND फंक्शन आप करेंगे, ए बी लिख रहे हैं तो ए और बी के बीच में क्या है, डॉट है, तो that is the AND function and that dot is treated as a product. तो ए बी को आप बोलेंगे कि ए डॉट बी है, दैट इज द प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इन बुलियन, इन यू कैन से इन बुलियन अलजेब्रा, यू कैन से इन बुलियन अलजेब्रा, है ना, द word product. Product means what? Product means logical and, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं ये आपका लॉजिकल एंड के इक्विवेलेंट है, मींस लॉजिकल एंड फंक्शन, ठीक है ना, एंड द लॉजिकल प्रोडक्ट, so logical, you can say the logical product of several variables on which function depends is considered to be a product term, है ना। तो जितना भी आप लॉजिकल प्रोडक्ट सेवरल वेरिएबल्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे उसको हम लोग प्रोडक्ट टर्म ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। नाउ यू कैन ऑलरेडी हैव अ कॉन्सेप्ट कि द you just mention here the variables in a product term, the variables in a product term। अब ये प्रोडक्ट टर्म में जो वेरिएबल्स हम लोग लेंगे
वो किस तरह से अपीयर होगा। जैसे अगर हम ए बी बोल रहे हैं तो ए बी बोथ आर इन नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, लेकिन जैसे ही हम ए बार बी बार बोलेंगे तो बोथ आर इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। जैसे ही हम बोलेंगे ए बार बी तो ए बार इज इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, बी इज नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। दैट मीन्स वट एवर वेरिएबल्स अवेलेबल इन द प्रोडक्ट टर्म दैट कैन बी represented either in complement or non complement mode। तो complement या non complement mode में वो represent होगा। तो in a product term the variables in a product term can appear either in complement or non complement फॉर्म। तो आइदर वो कॉम्प्लीमेंट या नॉन कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो दिस इज फॉर द प्रोडक्ट टर्म, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म का एग्जांपल आप ले सकते हैं फॉर टू वेरिएबल्स। यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक ए बी, ए बार बी, ए बी बार, ठीक है ना, ए बार बी बार, ठीक है ना। इसी तरह से थ्री वेरिएबल्स के लिए आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं ए बी सी, ए बी बार सी, ए बार बी बार सी बार, ठीक है, ए बी सी बार एक्सेट्रा। इस तरह से सिमिलरली फोर वेरिएबल के लिए तो ऑल आर व्हाट हियर ए बी इज प्रोडक्ट टर्म, ए बार बी इज प्रोडक्ट टर्म, ए बी बार इज आल्सो प्रोडक्ट टर्म, ए बार बी बार इज आल्सो प्रोडक्ट टर्म। थ्री वेरिएबल के लिए ABC is the product term, AB bar C is the product term. Now whenever we are using this product term, yani whenever we apply logical OR operation in between various product term, then it become SOP form of the expression, yani Boolean function is treated as a SOP form of the expression. So this is the representation for sum term. Second one is the product term के बाद है sum term। अब ये सम टर्म बेसिकली क्या है, जस्ट जो अभी हम लोग डिस्कस किए जस्ट इसका उल्टा, यानी कि एंड के लिए डिस्कस किए, अगर और के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे तो सम टर्म इज व्हाट, इट इज द एंड और, दैट इज यू कैन मेंशन द साइन आल्सो, दैट इज प्लस साइन, और दैट इज प्लस साइन, दैट इज द साइन ऑफ द पर्टिकुलर लॉजिकल और, इज जनरली used to refer a sum। यानी कि कोई भी सम टर्म, जो सम टर्म हम लोग ले रहे हैं, अगर हम और को रिप्रेजेंट करें तो और इज जनरली यूज्ड एज यूज्ड फॉर द सम टर्म। तो और अगर किसी भी लिटरल्स के बीच में, जैसे यहाँ लॉजिकल एंड, हम ए बी के बीच में एंड डॉट ऑपरेटर है, यानी ए बी के बीच में लॉजिकल एंड है तो ये प्रोडक्ट टर्म है। अगर ए बी के बीच में लॉजिकल और अप्लाई किया जाए, यानी whenever we place logical or operation and for representing logical or operation we use the plus sign। तो if whenever you use a plus b, तो a plus b में a और b दो लिटरल्स यूज हो रहा है और दोनों आपका विदाउट यानी कि नॉन कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो इन बिटवीन ए बी इफ यू प्लेस प्लस साइन देन इट इज ट्रीटेड एज ए सम टर्म। तो whenever you are using sum term for the logical AND operation, then it become product of sum term, because several sum term is used to find out the POS form। जैसे यहाँ पर sum of product किए तो various product term is used to find out the SOP form, उसी तरह से various sum term is used to find out the product of sum term। So here in this case again the logical sum of variables, the logical sum of several variables, several इसलिए कि दो वेरिएबल भी हो सकता है, तीन वेरिएबल भी हो सकता है, चार वेरिएबल भी हो सकता है। several variables on which function depends, function depends is considered to be a sum term, ठीक है ना। तो अगर हम लॉजिकल सम वेरियस वेरिएबल सेवरल वेरिएबल्स के ऊपर किसी फंक्शन में लॉजिकल सम अगर यूज करें
तो उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यानी कि सेट ऑफ वेरिएबल्स जहां पर लॉजिकल सम आप यूज कर रहे हैं उसको सम टर्म बोला जाएगा, ठीक है। अगेन सम टर्म इज ऑल्सो represented the literals, or you can say the variables in a sum term. You can write the variables in sum term. Just here we write the variables in a product term can appear either in complement or non-complement form. Same thing here, the variables in sum term can appear either in complement or uncomplement या non-complement form. तो you can take example like sum term के लिए, जैसे यहाँ a बार b, a b बार लिए, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, a plus b is the sum term, a bar plus b is the sum term, a plus b bar, a bar plus b bar. यानी whenever we are placing logical or operation in between the literals, and that literals may be represented either in complement or non-complement form. For three variable also we can take a plus b plus c, a plus b bar plus c, a bar plus b bar plus c bar, a plus b plus c bar, etc. So these are what? These are the sum term. Now why we discuss this product term and sum term? Because we have to represent the expression either in SOP or POS form. So sum of product term and product of sum term. So first of all we discuss what is the product term and what is the sum term. Any confusion in this two terminology? No sir, it's already known. Now we just discuss one by one. SOP, that is sum of प्रोडक्ट. तो एसओपी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म यूज होगा और प्रोडक्ट टर्म के बीच में हम लॉजिकल और ऑपरेशन लगाएंगे. सम ऑफ प्रोडक्ट लिखने का मतलब है सम इज फॉर लॉजिकल और एंड प्रोडक्ट इज फॉर लॉजिकल एंड. तो वी नीड सेवरल प्रोडक्ट टर्म टू रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म. तो वी कैन से एसओपी इज व्हाट, द लॉजिकल, वी कैन राइट द लॉजिकल सम ऑफ two or more logical product terms. कम से कम तो दो चाहिए ही, क्योंकि एक से आपका लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है. तो मिनिमम दो एक्सप्रेशन चाहिए. जैसे दो इनपुट के लिए आप कॉम्बिनेशन कितना बनाते हैं, 4. तो 4 में से कोई जरूरी नहीं कि चारों एक्सप्रेशन हमें यूज हो जाए, चारों कॉम्बिनेशन लाइक ए बी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी. ये आपका 4 कॉम्बिनेशन बनता है ए बी, 2 इनपुट के लिए. उसी तरह से 3 इनपुट के लिए 8 कॉम्बिनेशन बनता है. तो उस 8 में से जो भी कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे एक्सप्रेशन में, वो एक्सप्रेशन में ऑन रहेगा, बाकी ऑफ रहेगा. तो वो जितना भी आपका कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन 3 वेरिएबल के लिए बनता है, तो वो 8 कॉम्बिनेशन इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट टर्म. नाउ व्हाटएवर प्रोडक्ट टर्म यू आर यूजिंग इन द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन or any logical or boolean function, then that particular product term is on for your function, rest of the product term is off for your expression. So logical sum of two or more logical product term is called as sum of product expression, or you can say sum of product term also. So the logical sum of two or more logical product term is called sum of product expression. It is basically an OR operation
है ना, of and operated variable and operated variables. So it is basically an or operation of and operated variables. And operated variables means because we are using product term, and in product term we are placing and in between the various literals. So that is and operated variables, because entire set of product term is used as a variable in between which we are placing logical or operation. So we have like, we write f is equal to ab plus a bar b bar plus a b bar. Like this is the function of having two variable. तो इसमें दो वेरिएबल के लिए जो हमने यहाँ प्रोडक्ट टर्म यूज किया. नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट टर्म वी हैव? So in this expression, yes, these are the product terms. So three product terms is used to generate this logical function. And why it is mentioned? It is basically an OR operation, because plus is mentioned in between all product term. तो हर product term के बीच में आपका plus mention किया गया है. Similarly, whenever you are taking example of three variable, then f is equal to a bar b c bar plus a b c plus a b bar c bar. So here again there is three product term, यानी तीन product term इसलिए लिखा गया है the logical sum of two or more. तो कम से कम दो या दो से अधिक जितना भी आप लेंगे लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म के बीच में लॉजिकल सम आप जब लगाएंगे, तो ये जो लॉजिकल सम प्लस लगा रहे हैं ये आपका बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि द एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन एसओपी फॉर्म. सिमिलरली वी डिस्कस द सेकेंड वन, दैट इज POS, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम. तो प्रोडक्ट ऑफ सम में वही चीज होगा, द लॉजिकल सम की जगह क्या हो जाएगा? लॉजिकल प्रोडक्ट. So a product of some expression, a product of some expression is a logical product, is a logical product of, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर. यहाँ पर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म था तो यहाँ हो जाएगा लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर लॉजिकल सम टर्म, लॉजिकल सम टर्म. ठीक है ना? और अगेन यहाँ पर इट इज बेसिकली एन और ऑपरेशन ऑफ एंड ऑपरेटेड वेरिएबल की जगह उल्टा हो जाएगा. इट इज बेसिकली एंड ऑपरेशन ऑफ or operated variables, because now we are using a plus b. So it is basically and operation of or operated variables. तो एग्जाम्पल वी कैन जस्ट सी. एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? लाइक हम वेरियस प्रोडक्ट टर्म यूज करेंगे, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस ए प्लस सबको यूज कर लिए. ठीक है ना? तो इन बिटवीन दिस आर व्हाट. तो हम लोग यहाँ पर वेरियस सम टर्म को यूज किए लॉजिकल एंड ऑपरेशन. That is why it is mentioned it is basically an operation of or operated variables. तो ये or operated variables हमको यहाँ पर मिल रहा है. We are using here and. हाँ, तो this is the or operated variables, जिस पहले से or operated. तो these are the sum term in between this sum term. ठीक है ना? तो ये आपका sum term है. sum term 1, ये ST2, ST3, ST4, यानी कि तो यहाँ पर नंबर ऑफ सम टर्म के बीच में
we are applying, है ना, तो number of times we are applying logical or ऑपरेशन। तो इस लॉजिकल और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको वेरियस सम टर्म चाहिए होगा। तो ये वेरियस सम टर्म जो है वो 2 वेरिएबल को यूज करके, 3 वेरिएबल को यूज करके हम निकालेंगे। तो अगर हम 2 वेरिएबल लिए तो उसी तरह से सिमिलरली वी कैन आल्सो टेक इन दिस मैनर a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b a बार प्लस b बार प्लस c डॉट a बार प्लस b प्लस c बार। इस तरह से और भी ले सकते हैं। तो दीज आर 3, यानी 3 वेरिएबल्स के लिए 3 सम टर्म यूज हुआ और तीनों सम टर्म के बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक एक्चुअली इट इज द f इज इक्वल टू, यानी कि दीज आर द बुलियन फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है ना। तो एनी कंफ्यूजन इन SOP एंड POS फॉर्म? एनीवन? Just take that. ठीक है ना। So after discussion of SOP and POS and sum term and product term, now we discuss the terminology, 2 terminology that is used in the particular K-map. We are in the process to discuss the K-map. Before discussion, we just discuss the mean term and max term. So basically whatever we discuss right now, यानी sum term जो हम लोग discuss किए, तो max term is nothing, it is the product term, यानी कि mean term is the product term and max term is the sum term, यानी कि whatever sum term we are using in the Boolean function, that is actually max term. So max term is equivalent to the sum term and mean term is equivalent to the product term. So these mean term and max term is used in the K-map whenever we are in the process to simplify any Boolean function. So one by one we discuss. First we discuss the mean term. तो ये मीन टर्म और देन मैक्स टर्म। बिकॉज ये मीन टर्म और मैक्स टर्म आपका यूज होगा जब आप के मैप में एलोकेट करेंगे। अब बेसिकली के मैप क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मीन टर्म इज व्हाट? अ प्रोडक्ट टर्म। Mean term is a product term containing all k variables. Why it is k variables? Because number of variables is not fixed, so k is the number of variables. So a product term containing all k variables of the function in either complemented or uncomplemented form is known as or called a mean term. तो जितना भी मीन टर्म लाइक ए बी, ए बार बी, ए बी बार, ए बार बी बार, ये जो भी हम एक्सप्रेशन प्रोडक्ट टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर मीन टर्म व्हेनेवर वी आर एलोकेटिंग द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन द के मैप। तो के मैप में मीन टर्म इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोडक्ट टर्म एंड मैक्स टर्म इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर सम टर्म। ठीक है ना। तो मीन टर्म अगर हम देखें तो 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स के लिए अगर मीन टर्म देखेंगे
तो पहले मीन टर्म को डिस्कस करने से पहले मैक्स टर्म भी आप मेंशन कर लीजिए। तो मैक्स टर्म इज व्हाट? जैसे प्रोडक्ट टर्म कंटेनिंग ऑल वी जस्ट राइट, हियर वी राइट अ सम टर्म containing all k variables of the function in either complemented or uncomplemented form is called max term. Now we just see through the example. Now see, for two variables, just take the example. For two variables, अगर हम लोग देखें तो two variables, suppose let A, B be the literals used in the Boolean function, then mean term max term क्या होगा आपका? So we just notify this one like A, B. So what is the mean term we just mentioned here, and what is the max term? So basically max term is what? It is the complement of the mean term. तो आपका दो इनपुट के लिए कितना कॉम्बिनेशन बनता है? How many combination of input row we have for two input? 4. 4. So half of 4, that is 2 times 0, 2 times 1, then 0, 1, 0, 1. So mean term is what? Mean term is the representation. A or B. So 0 is the representation for complement. So here we write A bar B bar. तो जहां 0 है उसको complement form में लिखेंगे. तो A bar B, then A B bar, and here we write A B. And what is the max term? Max term is the complement of this. तो हम लोग principle of duality पढ़े, वहां complement, dual और complement देखे. तो just apply complement in this, you will get the max term of the same. तो A bar B bar है, तो max term क्या हो जाएगा? Complement of this A plus B. A plus B is the max term for this. What about this? A bar है, just write the complement of mean term. तो A bar है तो क्या हो जाएगा? A plus